બારસા એકેડેમી આ પાનખરમાં દેશભરમાં 6 શિબિરો સાથે ભારતમાં પરત ફરવાની જાહેરાત કરતા ગર્વ અનુભવે છે, જે બાળકોને લિયોનેલ મેસ્સી, આન્દ્રેસ ઇનિએસ્ટા, ઝેવી હર્નાન્ડેઝ અને ઉભરતા સ્ટાર લેમિન યમલ જેવા દંતકથાઓને આકાર આપતી પદ્ધતિ હેઠળ તાલીમ લેવાની દુર્લભ તક આપશે. પહેલીવાર અમદાવાદના યુવા ખેલાડીઓ પણ આ અનુભવનો ભાગ બનશે. આ શિબિરો ફક્ત ફૂટબોલ કરતાં વધુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બારસા એકેડેમીના ગ્લોબલ ડિરેક્ટર બેની મેગ્રેલીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ ભારતીય બાળકોને બારસા રીતે તાલીમ લેવાની તક આપે છે, એક એવી રીતે જે બોલ પર કુશળતા જેટલી જ ચારિત્ર્ય, नेतृत्व અને आदर विकसावे छे. मेरा नाम अभिषेक सकलानी है. सबसे पहले मैं FC बार्सिलोना जो क्लब है, बारसा एकेडमी है, उनको थैंक यू करना चाहता हूँ कि वो इंडिया में आए. ऐसा पहली बार हुआ है कि बारसा एकेडमी इंडिया में पहली बार यहाँ पे आया है. अपने कैंप्स उन्होंने आयोजन किए हैं यहाँ पे, और यहाँ के बच्चों को बारसा मेथोडोलॉजी के थ्रू अच्छे से ट्रेन करेंगे. बच्चों को हर एक चीज़ सिखाएंगे, जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है फुटबॉल की वो सिखाएंगे. आज तक होता ये था कि हमारे बच्चों को भारत से दूर स्पेन जाना पड़ता था फुटबॉल सीखने, बार्सिलोना जाना पड़ता था, लेकिन बार्सिलोना यहाँ पे आया है, ये बहुत बड़ी बात है. ये जो है फुटबॉल के लिए और ख़ास करके अहमदाबाद के बच्चों के लिए ये बहुत एक बड़ी चीज़ है. और मुझे लगता है आने वाले समय में जो ये कैंप है इसका बहुत से बच्चों को फ़ायदा होगा.